Good morning, all of you. Ashok Kumar Misra. Today, going to continue with the Standard 7, Chapter 8, more on to CC3. A cascading style sheet makes it easier to enhance the look of the different element on a web page. It defines a structure and way to presentation of the website. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है बेसिक ऑफ HTML और इस चैप्टर में हम उसके और भी आगे की बात पढ़ेंगे स्किल ऑफ CSS। अब देखिए इसमें आज का जो पॉइंट है इनलाइन स्टाइल। एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, इनलाइन स्टाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड यूज टू अप्लाई द CSS ऑन द एलिमेंट्स टू ए वेब पेज. In this method, a style declaration is given to each individual element with the help of a style attribute. This is not an efficient use of a style sheet, as the declaration is to be repeated every time, even if the same effect is to be used by some other element in the document. So, now text property. Text property in cascading style sheet CSS provide the various formatting options to a style in the text in a web page. In following section you will learn about the various text properties and their description. जैसे text align. This property generally applied to a block of the text H1, P, etc. used to set the horizontal alignment of the text. तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब टेक्स्ट डेकोरेशन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड स्पेसिफाई द डेकोरेशन ऑफ द टेक्स्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट इन द ब्लॉक. कलर, दिस प्रॉपर्टी हेल्प इन सेटिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज टू ट्रांसफॉर्म द लेटर इन द टेक्स्ट इनटू द अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड्स. Text indent properties specify the indentation of the first line of a text. उसके बाद है word break. The word break properties specify the line breaking rules. Line height, these properties used to specify the space between the two lines of the text. उसके बाद है font family. Font family specify the polarities list of the font to be used to display a given element or web page. On computer screen, sans serif fonts is considered easier to read than the serif fonts. If you do not specify a font size, the default size for the normal text is 16 px and 1 px is equal to 1 em, where em is the unit of measuring the width of the printed matter. If font family name contains the space or the special symbol in it, it must be enclosed in a quotation marks. Font size, it is used to set the size of the text. Font style, these properties display the chosen font either in the normal, italic or the obelisk. Margin property is define the distance from each side to the side of the neighboring elements of the document. Border property help you to set the border style, border width and border color of the HTML elements. Border style, it is set the border, its default value is none. Border color property allow you to change the border surrounding of an element. You can individually change the color of the bottom, top, left, right side of the element's border. Now these are the details of the chapter 8. Thank you. Have a nice day.